Today we'll discuss about application of indifference curve effect of tax. Okay, so what is the tax effect? We'll first discuss the case of direct tax. Now, what is direct tax and how does it affect consumers' income? It its effect can be seen as a reduction in income. While in case of indirect tax, you can see it as an increase in the price. Okay. Now, when you look at this diagram, girls, you can see that initially the consumer was on the budget line AB. Okay. He was on the budget line AB, and when tax was levied on his income, जब आपका डायरेक्ट टैक्स लेवी हुआ तो उसकी वजह से बजट जो आपका इनकम है वो डिक्रीज हो गया. जब इनकम डिक्रीज हो गया उसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, जब इनकम डिक्रीज होता है पैरेलल शिफ्ट होता है. तो अब न्यू बजट लाइन है A1B1. ठीक है, तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब कंज्यूमर इज ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व एंड एट अ लोअर इक्विलिब्रियम ऑफ E1. अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स में आप देख सकते हैं गर्ल्स, जैसे कि मैंने बताया कि इट कैन बी सीन एज प्राइस राइज. ओके, प्राइस राइज की तरह देख सकते हैं. तो मतलब P हैज रिजन, P ऑफ X यू कैन से हैज रिजन, बिकॉज ऑफ विच आपका बजट लाइन जो है वो अंदर की तरफ रोटेट हो गया है या शिफ्ट हो गया है या स्विबल हो गया है. और इसमें भी कंज्यूमर हैज गॉन डाउन on a lower indifference curve with low showing low level of satisfaction. ई से वो E1 पे चला गया जो लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है. तो हम दोनों ही केसेस में, इन केस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, we can observe that consumer satisfaction has gone down. Now, the question which should come to your mind is that which type of tax is better for the consumer. Okay, that means that if we impose same amount of tax on consumer, which one would be better for him? Now, this can be seen with the help of this diagram. Okay, now you can see initially the consumer was on budget line AB. Okay, initially the consumer was on budget line AB. Now, and his equilibrium point was E, right? Equilibrium point was E, and consumption of X was, how much X was he consuming? That is QX is equal to OM. Okay, now due to indirect tax, okay, due to indirect tax, now consumer will purchase commodity X on new budget line which is AB1. इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्स को हम लिख सकते हैं IT की वजह से, नाउ कंज्यूमर इज ऑन अ डिफरेंट बजट लाइन विच इज AB1. Okay, and on a different we can say indifference curve also. So from 3 he has gone down to 1. Okay, now in order to consume same quantity OM, same amount of quantity OM, the consumer has now to spend how much amount of income? AN1. Earlier, how was he spending for the same commodity? AN. Okay, now he has to spend AN1. So the difference between these two, okay, will be the amount of tax consumer is paying. NN1 is the amount of tax consumer is paying. Okay, now suppose the same amount of tax is levied in the form of indirect tax. Now let us look at that. Let's just clear the space first. Okay, same amount of tax is levied as indirect tax. ओके, सो द न्यू प्राइस लाइन कौन सी हो जाएगी जब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई होगा? तो AB से कंज्यूमर विल गो डाउन टू NL. नाउ on NL you should observe, girls, that we have a higher indifference curve which is higher than the indifference curve which we had when we were on the indifference curve 1.
है ना। तो जो पहले जो जब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लेवी हुआ उसका इंडिफरेंस कर्व जो है वो लोअर है, और जो डायरेक्ट टैक्स वाला इंडिफरेंस कर्व है वो हायर है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो बेटर होता है if we compare it with indirect tax for the consumers. Okay, so that is all for today, and we are done with indifference curve analysis. In the next class we will start with another topic. That is all. Thank you so much.